Good morning, student. Today's topic is chemical properties of nonmetals. Most of the nonmetals react with oxygen to form acetic oxide and some other form neutral oxide. To show that nonmetal react with oxygen to form acetic oxide, उसके लिए एक्टिविटी हम देखते हैं. सल्फर पाउडर, diffracting spoon, burner, a gas jar covered with a lid, water, petri dish, red and blue litmus paper. Take a small amount of a sulfur powder in it, reflecting spoons, and heat it over a flame. Flame इसको क्या करेंगे? जलाएंगे. As soon as sulfur start burning with a blue flame, sulfur जो होगा वो जलना चालू कर देगा. As soon as sulfur start burning with a blue flame, introduce the refracting spoon is a gas jar. Sulfur burn in the air of a gas jar to form a presence smell आएगी इसकी गैस सल्फर डाइऑक्साइड की. कीप द गैस जार कवर्ड विथ अ lid to ensure that the gas produce do not escapes. बहुत सावधानी पूर्वक ये सब काम करना है, नहीं तो उसमें से सल्फर के गैस अगर निकल जाएगी तो पता भी नहीं चलता है. रिमूव द reflecting spoon from the gas jar after some time. Add a small quantity of water into the gas jar and quickly close to lids. Shake the gas jar to dissolve sulfur dioxide gas. Now pour the water having sulfur dioxide gas dissolved in it in a petri dish. Check about the solution with red and blue litmus papers. When sulfur burn in air, it combine with किसके साथ combine करेगा? With oxygen to form sulfur dioxide. Again I repeat you, when sulfur जो sulfur रहता है नॉन मेटल होता है, बर्न इन एयर, एयर के साथ जब बर्न करेगा इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड विच इज एन एसिटिक ऑक्साइड होता है. सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड सॉल्यूशन एंड दिस sulfurous acid turn blue litmus red, showing that it is an acid and sulfur dioxide is acidic in nature. Non-metal react with oxygen to form acetic oxide. Similarly, when carbon, a non-metal वो भी है, burn in air, it reacts with oxygen to form an एसिटिक ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिटिक ऑक्साइड होता है कार्बन का. दिस एसिटिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड. दिस कार्बोनिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, शोइंग दैट इट इज एन ए क्या है ये? इट इज एन एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिटिक ऑक्साइड. Some of the non-metal react with oxygen to form neutral oxides. For example, nitrogen react with oxygen to form nitrous oxide. नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को फॉर्म करता है. Some of the non-metal their oxide are नेचर और as far as जैसे नॉन मेटल विथ नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड से कार्बन है. कार्बन के ऑक्साइड क्या होगा? CO कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिक होता है. फास्फोरस के होंगे ऐसे कुछ एसिटिक ही होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं एसिटिक होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिटिक ही होता है. हाइड्रोजन जब वाटर से रिएक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट न्यूट्रल
बनेगा, नेचर उसका कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। नाइट्रोजन भी ऐसे बहुत से एसिटिक और न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। रिएक्शन विथ वाटर, metals react with water and displace hydrogen from water to form metal hydroxide, a metal oxide, and hydrogen gas. Some metal react with cold water, some with a hot water, and some there with steam.